टेबल, उसका राउटिंग टेबल होगा, हर एक का टेबल है। तो उसमें क्या करेगा, उसमें एक एसपीएफ एल्गोरिथम यूज होती है, डाइजेस्टर्स एसपीएफ एल्गोरिथम, उसको वो रन करेगा और उसके बाद विल फाइंड आउट कि व्हाट्स द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर मी टू रीच एनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। EIGRP के केस में क्या था कि जो राउटर 2 ने R1 को बताया है, R1 को उसे बिलीव करना पड़ता था, बट उसको जो R5 ने R2 को बताया, R2 ने R1 को बताया, बट इसमें R2 अपना पूरा टेबल बता रहा है, R5 उसे अपना पूरा टेबल बता रहा है, R4 बता रहा है, R6 बता रहा है, सिमिलरली R3 भी बता रहा है। दिस इज लिंक स्टेट। पूरा हर एक राउटर का ये अपने आप को एक सिंक्रोनाइज करते हैं कि आई शुड हैव द राउटिंग टेबल ऑफ एंटायर नेटवर्क, पूरी टोपोलॉजी का मेरे पास राउटिंग टेबल होना चाहिए। दिस इज व्हाट द प्राइम डिफरेंस बिटवीन अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर में क्या है, जो आपका नेक्स्ट हॉप है, लेट्स से दिस इज माय नेक्स्ट हॉप, जो ये इसे बता रहा है, इसे उसी फेस करना पड़ेगा। बट इस केस में R2 तो बताएगा, बट R5 ही इसे बताएगा। इसी तरह R5 को भी सारे राउटर्स अपना डेटाबेस सेंड करेंगे। अब उस डेटाबेस में से फिर ये एसपीएफ एल्गोरिथम यूज करेंगे, डाइजेस्टर्स एसपीएफ एल्गोरिथम, उसमें से he will find out कि which is the best shortest path for me to reach any particular destination. I hope link state clear हो गया सबको क्या होता है। स्लाइड में तो एक्स्ट्रा शेयर दिया हुआ है। Okay, link state routing protocol है। The current version of OSPF which we are using is version 2 right now. This is a very important question। कोई आपसे maybe you might not be facing an interview, अगर आप कभी स्टूडेंट्स जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि OSPF का करंट वर्जन कौन सा है, वो that is your version 2 and the administrative distance of OSPF is 110. Yesterday I remember कोई यहाँ बैठ के मुझे बोल रहा था कि कॉस्ट होता है कुछ, I think नहीं है शायद वो अवेलेबल यहाँ पे। OSPF uses, आप बोल रहे थे सर, okay, OSPF का जो मेट्रिक है that is cost. It will consider cost कि मेरे को सबसे उस पर्टिकुलर दूर के नेटवर्क पे जाना है, बट मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है और कम से कम कॉस्ट में जाना। एंड कॉस्ट एंड द बैंडविड्थ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी कॉस्ट कम रहेगी उतना बैंडविड्थ हाई रहेगी। तो बैंडविड्थ हाई है तो अगर आप ज्यादा डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो इजीली ट्रेवल होगा। OSPF calculates shortest path using digesters SPF algorithm. OSPF is a classless routing protocol, support VLSM. OSPF also supports summarization and authentication. OSPF sends its update to a multicast address of 224.0.0.5 and .6. अभी तक हमने RIP पढ़ा, हमने EIGRP पढ़ा, उसमें we were using .9 and .10 अलग-अलग routing protocol, एक ही मल्टीकास्ट एड्रेस या एक ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज कर रहे थे। बट OSPF इज द ओनली प्रोटोकॉल जो आपके दो उसको यूज करती है, दो मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज करती है। एंड देयर इज नो प्रैक्टिकल हॉप काउंट लिमिट फॉर द OSPF। यू कैन हैव n नंबर ऑफ राउटर्स। OSPF areas. OSPF introduces a concept of areas. Areas are, you can say areas are almost similar to your autonomous system number of your EIGRP. Every router is a part of an area. मैंने आपको EIGRP के अंदर लिखा था autonomous system number 10 है, autonomous system number 20 है। यहाँ पे areas introduce हुए and area 0 is called as your backbone area. Every router or every other area should be connected to your area 0, that is your backbone area.
if they are not connected to your backbone area, वो काम नहीं करेंगे. Areas other than your area 0 are called as non-transit areas. क्या कहते हैं उन्हें? Non-transit areas. Let's say जैसे मेरे पास एक ये बहुत बड़ा नेटवर्क है. This is my area 0. Okay. और यहां पर मेरा एक और नेटवर्क है. This is area 10. ये मेरा नॉन ट्रांजिट एरिया हो गया. मैंने आपको कहा है कि हर एरिया को आपके बैकबोन एरिया के साथ जुड़ना कंपल्सरी है. अगर वो नहीं जुड़ता तो आपका पूरी टोपोलॉजी उसमें कंप्लीट नहीं होती. तो इसमें एक कुछ टर्म इंक्लूड होंगी. OSPF एरिया टाइप्स, राउटर टाइप, सॉरी, OSPF राउटर टाइप. लेट्स से ये मेरा एरिया 0 है. रिमोट सेंटर कैसे देखेंगे? एरिया क्लियर हो गया आपको? okay. काम करता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बनूं. Let's say this is area. I have routers here. I have some topology here. These are connected. I have another router here. And I have this much routers connected. This is area 10. This is area 0. Okay. अब इसमें क्या है? I introduce the concept area routers. ये जो routers हैं, which are inside a particular area, they are called as internal routers. क्या कहते हैं इन्हें? Internal routers. Internal routers. अब इन दोनों एरिया को, this is area 10, this is area 0. Area 10 should be connected to area 0. Every area should be connected to your backbone area. Now to connect area 10 to area 0, the router which is called as autonomous system router, ABR, autonomous boundary router. This is my ABR, autonomous boundary router. This is a boundary. This is a boundary of area 0 and this is a boundary of area 10. अब इन दोनों को कौन जोड़ेगा? ABR. Just consider ABR as a spider. He has one leg here, one leg here, 8 legs है इसकी. हर एक एरिया में आपको जोड़ रहेगा. This is your router. अलग-अलग लातें होती है स्पाइडर की. एक लात इसकी एरिया 0 में है और एक लेग इसकी एरिया 10 में है. So it is providing connectivity between area 0 and area. My area 0 is connected. My area 10 is now connected to my backbone area. This is what I was saying. एक और concept होता है इसमें, autonomous system boundary routers. Let's say this is an area. This is my ASBR, autonomous system boundary router. ये वो राउटर होगा जो मेरे को अलग ऑटोनॉमस सिस्टम के पास लेके जा रहा है. लेट्स से ये राउटर वो है जो मेरे को मेरे इंटरनेट के पास लेकर जा रहा है. दिस इज माय ISP. ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कौन सा होता है? ASBR, जो आपको आपके ISP के पास लेकर जा रहा है या किसी और ऑटोनॉमस सिस्टम के पास लेकर जा रहा है. लेट्स से यहाँ पे आपका EIGRP का कोई आपने कंपनी टेक ओवर की है, वहां पे EIGRP रन हो रही है. कनेक्टिविटी आपके ASBR करवाएगा, वो आपका ABR नहीं कर सकता. जो अंदर राउटर्स यूज हो रहे हैं वो है आपके इंटरनल राउटर्स. एक और राउटर होता है विच इज अ बैकबोन राउटर, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर ABR, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि ABR के आपका जो आपका बैकबोन राउटर है वो आपके किसी और एरिया को आपसे कनेक्ट करे. That router might be at one particular area. Yes, this router is at a boundary, but
I can say it as a backbone router. This is not my ABR because this is not connecting me to any other area. Or is it connecting? No. So, backbone router का use it's just like a router, normal router. ये चल रही है यहाँ पे दिखता है ना चल रही है Okay, understanding OSPF neighbor discovery. Just like your EIGRP, OSPF also sends hello. To become neighbor, OSPF speaking router sends hello to each OSPF enabled interface after every 10 seconds. EIGRP कितने टाइम बाद सेंड करता था हेलो? 5 seconds. ये कितने देर बाद सेंड कर रहा है? 10 seconds. And what was the hold down timer for your EIGRP? 15 seconds. And the hold down timer for this is OSPF is 40 seconds. Okay. Neighbors are only found in routers which are in the same areas. If I want to be a neighbor with Nippon or with Amit sir, we should be in one particular area. For two routers to become area, they must agree on certain parameters inside the hello packet, just like your EIGRP. EIGRP के अंदर भी हमारे कुछ parameters होते थे जो मैच होने चाहिए. अगर वो मैच हो रहे हैं, उसी कंडीशन में हम जाके नेबर बनते हैं. एक नई टर्म है राउटर आईडी. It is a 32-bit number assigned to each OSPF enabled router. Router ID will be the highest active interface IP address. Confusing? सभी हाँ हैं. Okay. So very simple term, कुछ भी नहीं है. This is R1. This is some another router. Let's say ABR. ये आपस में कनेक्टेड है and they are into the area 0. Consider it as in the area 0. यहाँ पर क्या है? 10.1.12.0/24. This is .1. This is .2. So remote address value. अभी बैठो. Okay, what I am saying for all the remote centers, what I have done, I have brought a router here, and this is my ABR. जो मैंने आपको बताया. Let's say this is into area 0. This is area 0. This is router 1. This is, let's say, router 2. इसमें क्या है? ये इसका IP एड्रेस है. इसका IP एड्रेस है 10.1.12.1. इसका क्या है? 10.1.12.2/24/24. ओके. मैंने कहा कि राउटर आईडी जो है आपका 32 बिट एक नंबर है. जैसे ही मैं अपना OSPF प्रोसेस को इनेबल करता हूं अपने राउटर पे, जैसे मैं ये राउटर EIGRP करता था, इसमें अगर जैसे ही मैं राउटर OSPF करता हूं तो एक अपने आप एक राउटर आईडी को चूज कर लेगा. नाउ हु विल बिकम द राउटर आईडी? द फिजिकल इंटरफेस जो इसके साथ कनेक्टेड है, ही विल बिकम द राउटर आईडी. For R1, router ID will be this. Okay, let's say यहाँ पर मेरे पास एक और राउटर था, राउटर 3, जिसके साथ राउटर 1 कनेक्टेड है. यहाँ पे है 10.1.13.0/24. तो उस केस में कौन बनेगा राउटर आईडी आपको? उस केस में 13 वाला आपका राउटर आईडी बनेगा. हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस. बट जो भी बताया उसे भूल जाओ. यूजुअली क्या होता है, राउटर आईडी को जो भी हमारा लूप बैक होता है, दैट इज ऑलवेज गिवन द प्रेफरेंस टू बिकम द राउटर आईडी. योर लूप बैक, अगर मेरा यहाँ पे लूप बैक 1.0.0.1 भी है, स्टिल दिस लूप बैक विल बीट दिस फिजिकल इंटरफेसेस. दो दे आर हायर इन नंबर, बट स्टिल लूप बैक beats the physical interface. Now, why loopback beats the physical interface? Because loopback is your virtual address, virtual link. It will never go down.
ये तभी आप आ जाएगा जैसे आपका राउटर अप आया, एट दैट टाइम योर लूपबैक्स आर अप। आपका फिजिकल इंटरफेस तो डाउन हो सकता है बट आपका लूपबैक कभी डाउन नहीं होगा। बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू हार्ड कोड द राउटर आईडी। जैसे मैं किसी राउटर पे गया, मैंने किया राउटर आईडी मेरे को ये चाहिए, राउटर आईडी 10.1.13.0। इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा लूपबैक कभी भी बन नहीं सकता राउटर आईडी, बिकॉज मैंने प्रेफरेंस किसे दिए, उसे, क्योंकि मैंने उसे हार्ड कोड किया। Okay, parameters to be matched inside a hello packet. Now I told you just like EIGRP कुछ parameters हैं जो हमारे मैच होने चाहिए। पहला, area should be same, just like your autonomous system number। एरिया अलग होगा तो हम तो कभी नेबर्स बन ही नहीं सकते। आप दूसरे एरिया में रहते हैं, मैं दूसरे एरिया में बनता हूँ, हाउ कैन वी कम टू नो ईच अदर? इज इट पॉसिबल? वी कैन नॉट नो ईच अदर। नेक्स्ट इज योर authentication. Authentication only if it is applied. Your subnet mask, it should be always same. Actually areas का concept क्यों आया? Let's say मैं यहाँ पे सारे /24 यूज कर रहा हूँ, /24 और यहाँ पे मैं बीच में देना शुरू करता हूँ /27 /29 /30 या मैं कुछ भी दे रहा हूँ, तो दिस इज अ डिसकॉन्टिग्युअस नेटवर्क। कॉन्टिग्युअस नहीं रहना, अलग अलग हो गए, दो इट विल सपोर्ट बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि हर एक को दैट शुड बी इन द सेम एरिया, सेम सबनेट मास्क। नेक्स्ट, ओके, OSPF स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमें नेबर बनना है, कैसे बनेंगे आई शो यू। Okay, let's say this is my router 1, this is my router 2 and they are connected। So it also has some networks, यहाँ पे भी कुछ networks। Initially they are in the down state, किसमें है ये? Down state है, we don't know each other, who are you? अभी तो हम डाउन ही है। जैसे ही मेरा नेटवर्क ये अप आएगा, उस केस में क्या होगा, दे विल गो इनटू इनिट स्टेट। इनिट स्टेट मींस आई राउटर 1 is sending hellos to router 2, but it doesn't mean router 2 is also sending hellos to router 1। When both start sending hellos to each other, कुछ formal neighbors होते हैं ना, हम उनसे मिलते हैं, hi how are you, though we don't know their names, एक भी उनका ऐसा होता है। It's just like the same thing. Okay, hi, how are you? This is init state for routers. हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बस हाँ, yes, we are hello friends। Now for them to become neighbors, जब वो hellos एक दूसरे को send कर रहे हैं, there are some 4 parameters जो मैंने आपको बताए। Though there are more than 4 parameters, जो parameters मैंने आपको बताए हैं, वो essential parameters हैं। और आप पैरामीटर्स में अगर आपको पैकेट में दिखाऊंगा, जैसे वार्शाक को मैंने आज आपको दिखाया, सो यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, बट दीस 4 आर द एसेंशियल पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज योर टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में कैसे आएंगे? मैंने हेलो सेंड किया, राउटर 1 ने हेलो सेंड किया, राउटर 2 ने हेलो वापस सेंड किया, दोनों ने एक दूसरे के पैकेट्स को चेक किया, पैरामीटर्स मैच हो गए, yes we are neighbors now, हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, I know you, you know me very well, I know your name, I know your router ID, you also know my router ID, but it doesn't mean that we should start exchanging the things which are going inside my home। मैं अपने घर की बातें भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, because routing table मेरा खुद का है, वो मेरा खुद का है, वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करना चाहता। So routers will not, though we are neighbors, but we cannot exchange our routing table with each other। जैसे ही आपका राउटर 2-वे स्टेट में पहुंचता है, उसकी नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो चुकी होती है, बट इट डजंट मीन कि मैं आपको अपना राउटिंग टेबल भी सेंड कर रहा हूं। फिर आता है एक यहाँ पे चीज आती है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप।
अभी कहेंगे, अभी हम बात कर रहे थे कि दोस्ती की, नेबर्स की, अब यहाँ पे मास्टर एंड स्लेव आ गए हैं। ऐसा ही होता है राउटर्स में। राउटर्स क्या करते हैं, लेट्स से सर एक बार इसको जूम करेंगे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कई सारे राउट्स हैं, राउटर 2 के पास भी कई सारे राउट्स हैं यहाँ पे। ओके, इसके पास कई सारे नेटवर्क्स हैं, इसके साथ पास कई सारे नेटवर्क्स हैं। ये अपने नेटवर्क्स को एज ए डीबीडी सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? डीबीडी। व्हाट इज अ डीबीडी? डीबीडी इज अ डेटाबेस डिस्क्रिप्टर पैकेट। Database descriptor packet, DBDs. DBDs are nothing but are just like your cliff notes. Cliff notes समझते हैं? नहीं समझते? मैम ने ऐसे ला लिया। Okay. Cliff notes क्या होते हैं? आप you go to a restaurant, आप जाते हैं, आपको लाके मेन्यू दिया जाता है। दिया जाता है we have this, we have this, we have this, we have this. हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है। Now you tell me what thing you need. ये तो नहीं है ना वहां पे गए सारी चीजें लाके आपको दे दी, भैया क्या खाओगे इसमें से? कैसा होता है? ऐसा नहीं होता ना। आप गए तो आपको क्या क्या चीजें डिलीवर होंगी जो आपने which you have ordered for. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, DVDs आर जस्ट लाइक योर समरी, एक क्लिक नोट है कि भैया हमारे पास, मेरे पास ये सब चीजें हैं, नाउ यू चूज आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, जो पहले डीबीडी भेज रहा है वो बन जाएगा आपका मास्टर, जो बाद में भेजेगा वो बन जाएगा स्लेव। कुछ नहीं होता, कंफ्यूजिंग, बंदे कंफ्यूज होते हैं कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कोई बहुत बड़ी बात है। जिसने पहले सेंड किया वहां पे आई विल शो यू, वहां पे लिखा जाएगा इस वी आर द मास्टर्स। जिसने बाद में सेंड किया वो कहेगा वी आर द स्लेव। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, जब वो इसमें जाएगा इट विल गो टू द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप फॉर्म हो गया, क्लिक नोट्स पता लग गए। राउटर 1 ने कहा ओके आई डोंट हैव दिस पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ योर्स, तो ये इसे यहाँ पे सेंड करेगा। इट विल, अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, इट विल एंटर इनटू अ लूप जिसमें क्या होगा, एक्स स्टार्ट चेंज हो जाएगा। एक्स स्टार्ट मींस एक्सचेंज स्टार्ट। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज स्टार्ट। ओके, स्टार्ट एक्सचेंजिंग योर राउटिंग टेबल विद मी। अगर ये भी अपने ट्रिगर्ड अपडेट्स को भी फॉलो करता है, अगर उसका कोई नेटवर्क डाउन जाएगा तो फिर ये वाला सिर्फ यही अपडेट भेजेगा कि दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इज डाउन, ये सबके बारे में नहीं बताएगा उसे। ओके, किसी को समझने में दिक्कत अभी तक? एक्सचेंज स्टार्ट, एक्सचेंज होनी शुरू हो गई। उसके बाद एक स्टेट आती है एक्सचेंज डन। मैंने यहाँ पे पीपीटी पे मेंशन नहीं करी है, एक्सचेंज डन, जब एक्सचेंज पूरी हो जाती है। उसके बाद आती है लोडिंग स्टेट। नाउ आई एम लोडिंग ऑल द राउट्स onto me, then from loading it will go to full. Now I have complete routing table with for. Now R1 also has the complete routing table of R2 and R2 has the complete routing table of R1. Now the databases of both the routers are synchronized. अब इसके ऊपर they will run Digestra's SPF algorithm to find the shortest path to reach a particular destination. समझने में कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया है। अगर अभी भी किसी दिक्कत है देन सॉरी, गॉड सेव्स डिले बहुत काफी डिले है इसलिए। ओके, आई हैव सीन, आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नोट पे मैंने लिखा हुआ है आफ्टर फुल स्टेट databases of OSPF router get synchronized and they run SPF algorithm to calculate the shortest path to each destination. सारा टेबल मेरे पास आ गया। SPF रन करनी है, SPF रन करना मैं आपको नहीं सिखा रहा बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाता है। ओके, OSPF ओवर ईथरनेट
वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, बीएमए। क्या कहते हैं, बीएमए नेटवर्क। सर एक बार स्क्रीन मेरी तो करिए कुछ। You cannot cheat OSPF. OSPF is very smart protocol. अगर मैंने किसी को लूप बैक दिया है, अगर मैंने उसका मास्क /24 भी किया है, it will treat it as a /32 as a host, as a stub host. मैंने आपके सामने OSPF के एरियाज को डिस्कस किया। कौन कौन से आपको 2 एरियाज बताए मैंने, कौन कौन से एरियाज बताए? एरिया 0 and non-transit area. But there are hell lot of areas in OSPF. One is stubby area, not so stubby area, total stubby area. फिर इसमें LSUs का कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने यहाँ पे स्किप किया। जैसे ही वो डीवीडी सेंड करता है ना, उसके बाद वो LSU सेंड करता है, लिंक स्टेट अपडेट सेंड करता है। जो लिंक स्टेट अपडेट है दैट इज नथिंग बट योर राउटिंग टेबल। बस मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सिर्फ 20 मिनट्स है हमारे पास। Okay, now we are on to OSPF over Ethernet, which is a broadcast multi-access network. Let's say this is a router here. We are on the same LAN segment. Okay, आपको पता होगा LAN को इस तरह से डिनोट करते हैं। This is another router here, and this is another router here. This is the symbol of your routers. Okay, this is it. Okay, this is your Ethernet segment. इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। Let's say I have a packet here. एक पैकेट है यहाँ पे। alright. तो ये जो पैकेट है, ये राउटर क्या करेगा, ये पैकेट इसको सेंड करेगा, ये पैकेट इसको सेंड करेगा, ये पैकेट इसको सेंड करेगा। राउटर 2 has also received this packet. तो ये सेम पैकेट राउटर 2 इसको सेंड करेगा, सेम पैकेट राउटर 2 इसको सेंड करेगा। इसके पास भी अब 2 पैकेट आ चुके हैं, तो ये सेम पैकेट यहाँ पे सेंड करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा। सिमिलरली राउटर 2 भी आपका पैकेट जो इसको रिसीव हो रही है हर एक को सेंड करेगा। दिस इज अ chaos इन द नेटवर्क। इससे आपका नेटवर्क चोक हो सकता है। क्या हो सकता है? चोक हो सकता है। This is the property of, this is not the property of the OSPF, this is the property of your Ethernet segment. OSPF over Ethernet, जब हम इस लाएंगे तो इस प्रॉपर्टी को, इस chaos को हम रिमूव करेंगे। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क होते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है कि जो भी एक पैकेट भी जाएगा तो सभी के पास रिसीव होगा, जो दूसरे के पास पहुंचेगा तो वो भी आगे सबको आगे सेंड करेगा। तो सिमिलरली ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो यू कैन सी एक पैकेट ने नेटवर्क को आपके चोक कर दिया, सिर्फ एक छोटे से पैकेट में। कितनी आपकी वो यूटिलाइजेशन हो जाएगी उसकी बैंडविड्थ की? ऑल एग्री ऑन दिस? इतना समझने में कोई दिक्कत? Shall we proceed? So OSPF over Ethernet पे हम आते हैं। This is also क्या था इसे? This is your Ethernet segment. इसमें कैसे चलता है? Now we come to OSPF over Ethernet. To avoid this chaos in the network, OSPF came with a solution called as DR and the BDR. What is now DR and the BDR? DR is your backup, is your designated router, and BDR is your backup designated router. Say again, हमारे पास ये similar topology है available. इसमें क्या किया? Let's say this router becomes your designated router, and this becomes backup designated router. This becomes BDR. क्या बन गया ये? BDR. अब जो ये बाकी remaining routers रहेंगे, they are called as drawers. क्या कहते हैं इन्हें? Drawer और DR others. Okay,
जो रिमेनिंग राउटर्स हैं वो बनेंगे डीआर अदर। अब जो आपका डेजिग्नेटेड, जो आपके डीआर अदर्स हैं, वो अपना सिर्फ अपडेट सेंड करेंगे सिर्फ डीआर को, इसे सेंड करेंगे डीआर और बीडीआर को। नाउ फर्दर इट्स द ड्यूटी ऑफ डीआर टू सेंड द सेम पैकेट टू दिस पर्टिकुलर फेलो हियर। लेट्स से इसने एक पैकेट जनरेट किया। नाउ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू एवरीवन, it will only send to the DR and to the BDR. Are you getting my point? उस प्रॉब्लम से हम ओवरकम हो रहे हैं कि जो ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, जो नेटवर्क चोक हो जाता था, क्या आप उस चीज से ओवरकम हो रहे हैं? ऑलराइट, तो जो DR है और BDR को सेंड करेगा। नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ द DR ओनली टू सेंड दिस पर्टिकुलर पैकेट बैक टू योर DR other. Though they will be neighbors, but they will not be exchanging the routing table, they will not be exchanging the updates. इतना क्लियर हुआ? अब मैंने आपको बताया था कि जो OSPF है उसमें हम यूज करते हैं दो मल्टीकास्ट एड्रेसेस, 224.0.0.5 and 224.0.0.6। ओके, अब जो डीआर अगर आपके डीआर और बीडीआर को सेंड करेंगे, वो सेंड करेंगे 224.0.0.6 पर, और जो डीआर वापस इधर सेंड करेगा दैट विल बी ऑन 224.0.0.5। क्लियर हुआ क्यों यूज कर रहे हैं दो मल्टीकास्ट एड्रेसेस? जस्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम। DR address will send to DR. Listen, DR other will send to DR at a multicast address of 224.0.0.6. Okay, and DR will send to DR others at a frequency of 224.0.0.5. Clear? And it will be also /BDR. Is it clear now? किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं? Because I remember in my CCNA days मैं सिर्फ पकड़ लेता था क्या प्रॉब्लम है। Okay, now ये तो मैंने जस्ट सिंपल एग्जांपल लिया कि दिस इज DR एंड दिस इज योर BDR। अब DR और BDR बनते कैसे हैं? An election is held actually। ऐसा तो नहीं है ना किसी को भी गली मोहल्ले का आपने वो बना दिया प्रेसिडेंट, आप इलेक्शन रन करते हैं। अभी इलेक्शन वैसे भी आ रही, तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को भी जाके कहेंगे जाके आप ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, इलेक्शन हेड होता है ना उसके लिए। सो सिमिलरली फॉर राउटर टू बिकम अ DR आपको एक इलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। When an OSPF router becomes active and discover its neighbor, it checks for DR and BDR. Let's say मेरा ये वाला राउटर है, सर मैं कर लेता हूँ। Let's say मेरा ये वाला राउटर है, ये पहली बार मेरे नेटवर्क टोपोलॉजी में अप आया। जैसे ही मेरे नेटवर्क टोपोलॉजी में अप आया, इसने देखा ओके वी आर ऑलरेडी हैविंग अ DR एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग अ BDR। तो ये क्या करेगा, वो उसको DR और उसको BDR मान लेगा। अब तो ऑलरेडी कोई प्राइम मिनिस्टर है तो हम क्या कर सकते हैं ना, तो ठीक है तो भैया है यार। बट अगर कोई ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो सब आएगा ना कि मैं भी रेस में शामिल हो जाऊं, कि मैं भी शायद PM बन सकता हूँ, आई एम आल्सो PM मटेरियल। इसी तरह जब पहली बार आप आया तो इसे देखा वो DR है, चलो ठीक है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हेल्ड होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी, इसमें अगर नेटवर्क डाउन जाता है, कुछ होता है, तो आपको इलेक्शन दोबारा हेल्ड होगा। ओके, सो DR और BDR में हम वापस आते हैं। लेट्स से सारे राउटर्स फर्स्ट टाइम आप आए, जैसे ही कोई राउटर फर्स्ट टाइम आप आएगा ना,
वो देखेगा कि कोई भी राउटर टोपोलॉजी में है नहीं, सो इट विल डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ डीआर। लेट्स से मैं किसी जंगल में गया, मैंने देखा कि इस जंगल में कोई भी नहीं, आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज अ किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर jungle. Okay, don't laugh at me, I'm not there jungly. So मैं पहली बार जंगल में गया, फॉरेस्ट में गया, लेट्स से सर गए एंड ये गए और ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट, ठीक है? डोंट बी सैड, यू आर अ किंग। ओके, तो इसी तरह जैसे ही राउटर पहली बार टोपोलॉजी में आ पाया, इसने अपने आप को डीआर मान लिया। अब जो नेक्स्ट राउटर टोपोलॉजी में आ पाया, उसने अपने आप को बीडीआर मान लिया। अरे आई एम जूनियर टू किंग, आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज अ बीडीआर। बाकी तो फिर प्रजा आएगी, डीआर बनी गई। ऑलराइट, बट हुआ क्या, जैसे ही मैंने क्या किया, और मुझे किसी को मैं चाहता हूँ पर्पसली कि मैं आई वांट दिस पर्टिकुलर फेलो टू बिकम माय डीआर, इसकी क्या होता है, विल चेक द प्रायोरिटी। क्या चेक करेंगे? प्रायोरिटी चेक करेंगे। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी राउटर इज 1। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी राउटर इज 1। अब उसने देखा सबकी प्रायोरिटी तो सेम है, देन आई कैन नॉट बी द डीआर। उस केस में क्या होता है, जो आपकी राउटर आईडी को मैंने आपको डिफाइन किया था, राउटर आईडी विंस द इलेक्शन इन दैट पर्टिकुलर केस। लेट्स से यहाँ पे this is .1, this is .2, this is .3 and this is .4. मैंने क्या कहा था, highest router ID. Highest router ID will be given the preference. So this is the highest router ID. .4. So this particular fellow will become your DR. Or otherwise, it is always recommended to change the priority manually and clear the OSPF process so that this particular fellow or this particular fellow can become the DR or the BDR. एक्चुअली जब आप प्रोडक्शन नेटवर्क में जाते हैं ना, तो आप नहीं चाहते कि कोई भी राउटर आके अपने आप DR या BDR बन जाए। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं दैट इज करेक्ट। मैं चाहता हूं, मैं इसको DR बनाना चाहता हूं, तो मैं हार्ड कोड करूंगा, इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी है? 1, बट आई चेंज इट टू लेट्स से 10 और 1000 बनी जा सकती है, कैन बी मैक्सिमम 255। let's say मैंने इसकी 200 तक कर दी प्रायोरिटी, so naturally he will become your DR now and rest will become BDR and DR others। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? Any problem मैम? Okay, this is what it is said here. Highest router ID wins the election. Priority is 1. Now configuring OSPF. सर, ये जो हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, this is on basis of This is a per interface property. Let's say कि मेरा यहाँ पे मैंने इसकी प्रायोरिटी, इस इंटरफेस की मैंने प्रायोरिटी 10 कर दी इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये आपका DR बन जाएगा। But let's say I have another LAN segment here. This is my another LAN segment और इसकी प्रायोरिटी है, let's say इसकी प्रायोरिटी है 20. So this router will be DR for this particular LAN segment, but this will not be DR for this LAN segment. This is a per interface property. इसके लिए तो ये DR रहेगा, but इस particular LAN segment के लिए this will not be the DR. by default priority is 1 for all the routers. Yes. Now उस केस में आपका राउटर आईडी ही चेक होता है बस। ठीक है, अभी 1 ही है सबकी और राउटर वो डाउन हो गया नेटवर्क, तो सबकी 1 ही आएगी, तो सब कहेंगे DR। तो राउटर आईडी तो जब सारे दोबारा आप पाएंगे तो किसी ना किसी सबको राउटर आईडी तो साइन होगी, तो जो राउटर आईडी हाईएस्ट होगी वो जीत जाएगी इलेक्शन को। ओके, इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक योर ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जो हम AIGRP में यूज करते थे, हियर वी यूज अ प्रोसेस आईडी, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी। वहां पे मैंने राउटर OSPF 10 किया था, इफ यू ऑल रिमेंबर, राइट? तो इसमें मैं क्या करूंगा, प्रोसेस आईडी लिखूंगा, बट दिस प्रोसेस आईडी को इट्स नॉट कंपल्सरी कि प्रोसेस आईडी शुड बी सेम।
दिस प्रोसेस आईडी कैन बी डिफरेंट. ASN तो सेम ही होना चाहिए, बट प्रोसेस आईडी कैन बी डिफरेंट. उसके बाद इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क का बहुत ज्यादा यूज होता है. आई हैव ऑलरेडी शोड यू कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है. सबको समझ आ गया था मॉर्निंग सेशन में कि व्हाट इज योर वाइल्ड कार्ड मास्क. Okay, so now we straightway go on to the configuration of OSPF. It's 12:55. I try to complete it till 1:20, not more than that. Okay. Stop sharing. इसमें ज्यादा डिबग विबग नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे. अच्छा, किसी को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आई OSPF का? Is it clear to everyone? Kindly click on fit to window remote centers. वैसे तो मैंने ये टोपोलॉजी बनाई थी आपके लिए कि आज इसे परफॉर्म करेंगे, बट आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, बट स्टिल मैं काम करता हूँ, दोबारा ही बना देता हूँ. I stop everything here. I close GNS. No. So GNS कैसे आएगा इसमें? विंडो दबाओ, Control I. GNS. Okay, I will make the new topology here. OSPF. Save the configuration. Okay. Topology is this. Here I'll be using router 1, router 2 is here, router 3 is here. I'll be using an Ethernet switch to connect all the routers, because I have to show you the network types. One is OSPF over DMA network, and other is your for the point-to-point link. This is your serial link, right? This is for point-to-point. Okay. These are the interfaces which I have here. First of all, let me start all the routers. Okay, my routers are on now. This is 10.1.14.0/24. अब तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है. Why I have taken this? This is 10.1.123.0. This is .2, this is .3, okay? Okay, I'll do the initial configuration. I'll run another change. Remote center पे सर ये visible होगा? Or should I change the background one? Desktop sharing. थोड़ा इसका size increase कर देते हैं. Clear है ना? Okay. Similar thing with router 2. I'll only change that. I'll not change the background color. जनरली हम अगर जीएनएस यूज करते हैं तो मैं इसे एक आइडल वैल्यू सेट कर लेता हूँ किसी भी पीसी की, किसी भी इसकी, ताकि इसकी ये जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है काफी हायर पहुंची होती है. सर इट विल से इट इज ऑलमोस्ट, it touched 100%. Now it's coming down.
मैं इसकी थोड़ी कम कर दूंगा. I will apply it here. And we'll again check for the CPU utilization. It is reduced to 19 and it will decrease gradually now. Okay, so now let's come back to the initial configuration. Enable configuration terminal, no IP domain, lookup, line console 0, logging synchronous. Now why I'm using this logging synchronous here, because जैसे कई बार मेरा नेटवर्क जैसे कोई लूप बैक आप आया तो मेरे को वहीं से कॉन्टिन्यूसली लिखना पड़ जाता है. तो इससे क्या होता है, लॉगिंग सिंक्रोनस से इट विल शिफ्ट मी टू अनदर लाइन. मैं दिक्कत नहीं होगी. कई बार प्रोडक्शन नेटवर्क में जब आपके हजारों राउट्स आ रहे होते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है उस चीज को समझने में. दिस इंटरफेस S0/0 10.1.14.1 255.255.255.0 no shut interface F0/0 IP address 10.1.123.1 255.255.0 no shut int loopback 1 IP address 1.1.1.1 ओके. इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. I will paste it here. Okay, now I move on to router number 4. This is 14.4 and it's not having this interface. Loopback, let it be 4. You can have any number. 4.4.4.4. All right. ये समझने में दिक्कत किसी को? All right. Now I move on to router number 2. I have this F0/0 here. F0/0. This is 123.2 and let the loopback address be 2.2.2. All right. इसमें तो दिक्कत नहीं है ना किसी को? Okay, now I router number 3. Loopback is, and this is 3. Clear? This is 110.1.123.3. Paste. Okay, my initial configuration is done now. So let me go on to router number 1 first. And here I'll use router OSPF OSPF. This is asking for the process ID. Can you see? Let's say process ID is, or should we look at the task? Task में क्या दिया है? Okay, they should be in the same area. Process ID can be anything. This I have to now mention network. Network is 10.1.0.0.0.255.255. Now is another term, area. I told you that router should be in the same area. Let's say मैं यहाँ पर गया, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं. This is all area 0. What is this? Area 0. Okay, I told you every router should be part of one area and they should be connected to your backbone area, which is your area 0. Okay, तो मैंने यहाँ जाके किया area 10.
network 1.0.0.0 0.255.255.255 area is 0. Okay, now I move on to router number 4 first because वो वहां पे connected है. Do debug IP OSPF adjacency. Now debugging is on head. ये मुझे आपको जो मैंने आपको बताया था मास्टर स्लेव इनिट विनिट ये सब इसमें अब आपको दिखाएगा ये. ऑलराइट, अब इसमें मैं जाता हूँ. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू से राउटर OSPF 1 network 10.1.0.0 0.0.255.255. Don't forget to tell about the area 0. Network कौन सा है? 4.0.0.0. ओके, डिबग विबग सब हो चुका है. थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज. पहले किस पे मल्टीकास्ट कर रहे हैं? 5 पे, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो इस पे आपका .5 पे अपनी अपडेट को सेंड कर रहे हैं. दिस इज इन द टू वे कम्युनिकेशन. स्टेट इज टू वे. सेंडिंग डीवीडीज. डीवीडीज क्या थे? डेटाबेस डिस्क्रिप्टर पैकेट्स. ओके, फर्स्ट उसने डीवीडी सेंड किया. वी आर नॉट स्लेव, वी आर द मास्टर. ओके, इसी में यहाँ पे कहीं पे एक्सचेंज स्टार्ट भी लिखा होगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. एंड दिस इज फ्रॉम एक्सचेंज स्टार्ट फ्रॉम लोडिंग टू फुल. Agreed. Router ID is for router 4 is 4.4.4.4. Why this is the router ID? Because this is a loopback address. Is this all clear to you? Okay. Now I move on to router number 2. Router OSPF 1 network is 10.1.0.0.0.255.255 area 0. नेटवर्क 2.0.0.0. जैसे ही मैंने किया इसकी स्टेट आप आ गई. नेटवर्क किया ना मैंने, लोडिंग टू फुल. Adjacency process 1 neighbor is this. Why this is the neighbor? Because this is the router ID of your router number 1. जैसे ही किया लोडिंग टू फुल आ गया, वो लोडिंग इज डन. Is it clear to everyone? Okay, now we move on to router number. अच्छा, इसको तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया ना. Router number 3. Router OSPF 1 network 10.0.10.1.0.0 area 0. Network 3.0.0.0.0.255.255.255 area. You can see. Yes, sir. But nothing is displayed on the screen. Only thank you is displayed. I'm not able to see it. Well, we haven't said thank you to you yet, but just a second. डिले नहीं है यहाँ पे. वैसे तो यहाँ पे नजर आ रहा है. What I am doing here, this is displayed on this laptop, and this is also a remote center as of now. Refresh करते हैं. Hi, is it going?
सर कुछ कॉलेज में मैम आपका कौन सा कॉलेज था? VIT. मैम आपने शायद फिट टू विंडो नहीं किया, वी ऑलरेडी अनाउंस किया, आप उसे फिट टू विंडो कर लीजिए। जस्ट अ सेकंड सर, दोबारा कर रहे हैं। रिमोट इंस्टीट्यूट से तो सब जगह पे एक ही इशू है, यहाँ पे आके सर प्लीज उसे मैम फिट टू विंडो कर लीजिए आप। सर आपके जो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आ रही हैं और उसके बीच में जो विंडो शो हो रही है उसके टॉप के ऊपर लिखा हुआ है डाटा ऑपरेशन के बिल्कुल नीचे। Thank you so much. Thank you. ये ऑटोमेटिकली पिछले 2 दिनों से हम बोल रहे हैं कि जब भी डाटा शेयरिंग हो ये ऑटोमेटिकली कर लिया कीजिए, इससे आपकी पूरा डेस्कटॉप शो हो जाएगा। अब देख लीजिए। ओके, फर्स्ट टास्क वाज आप इधर एक बार व्यू कर लीजिए। मैम उसका कर रिजल्ट नोटिफाइड है। Configure OSPF on all the routers. OSPF all done. At R4, check the state of the neighbor. Go to R4. To see the neighbor, I have to say show IP OSPF neighbor. This is the command to check the neighbor table. Who is my neighbor? 1. This is my neighbor, and the state is full. Why full? Because databases are synchronized. Who is my router number 4? This is my router number 4. इन दोनों की आपस में स्टेट क्या है? फुल है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। शो IP OSPF इंटरफेस loopback है इसका loopback 4। ये क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पे? दिस इज ट्रीटेड एज अ स्टब होस्ट। सर आपकी कमांड विंडो नहीं चल रही। सर यहाँ पे तो दूसरा हमने कनेक्ट किया हुआ, वहां पे तो सब विजिबल है। सर आपने फिट टू विंडो क्लिक किया? सर हमने किया है मगर अभी भी पीपीटी आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। जस्ट अ सेकंड सर। सर कौन से कॉलेज से हैं आप? SMVD। जस्ट अ सेकंड सर। Okay, look at you. मैं R4 के इस इंटरफेस पे गया। मैं इस इंटरफेस पे गया। What it is showing? This is into area 0. What is the router ID? This. Network type is point to point. Sir, SMVD में सिर्फ PPT नजर आ रही है। टीम व्यूअर आईडी देंगे सर अपना। SMVD kindly provide your team viewer ID to us. Okay. Hello timer is 10 seconds. Head is 40 seconds. Wait and retransmit time is 5. You can change this hello and dead timer, but we'll not be doing it today. 948 571 571 630 630 and password is password 7309. 7309. Okay. Now third thing says look for DR, BDR and DR others among router 2, 3 and 1, 2 and 3. Because this is a point-to-point network. This cannot be a DR or a BDR.
किसी को अभी तक समझने में दिक्कत? क्लियर और क्लियर? और क्लियर की बात है पीछे। किसी को all clear हुए? Come on, I know this is very tough to digest. ELGRP and OSPF, they are huge, but still मैंने छोटे से छोटा करके आपको समरी में समझाया. If you go to any center here in Chandigarh or anywhere, no one will tell you this about these states. No one will even show you. Okay. Okay. Now I have to look for who is the DR and who is the BDR. I think now it's fine. SMED is it clear now? Now it's ठीक है सर, Yes, sir. सर यही सबके सामने वीडियो जा रहा है और यही डेस्कटॉप पे ओपन है, ये उन्हीं के डेस्कटॉप है सर. काफी तो क्लियर है सर, ये थोड़ा बहुत तो नहीं. Alright. Show IP OSPF neighbor. Oh, look at here. Priority is, state is full. Router 1 is your. Now why router 1 is DR? Because सबसे पहले टोपोलॉजी में वो अप आया था. So router 1 declared himself as a DR. And who is the BDR? Router 2. Why? Second अप आया था. अब कोई कह सकता है सेकंड तो router 4 अप आया था. मैंने तो सबसे पहले router 4 को अप किया था. सर वो सीरियल से, But that is a point-to-point link. This is an Ethernet segment. This is a point-to-point. Clear है सबको? Okay. Now we move on to router number 2. Or let's go to router number 2 now. Show IP OSPF neighbor. Who is the DR? 1. And this neighbor 3.3 is your DR other. Is it clear to everyone? Router 1 up आया, declared himself as a DR. Router 2 second up आया, he declared himself as a BDR. Router 3 बचा, okay भैया, मैं प्रजा बन जाता हूँ, I'll be the DR other. Is it clear to everyone? Okay, now let's see next task क्या है हमारी. ये क्या हो गया? कहाँ चला गया? Change the priority of R2 to 100 and make him DR. I told you that this is a per interface property. I click on router 2, INT configuration mode में जाकर interface F0/0 IP OSPF. There's so many things which you can do. I have to choose this priority. What I have to choose? Priority. I have to change the priority to 100. Okay, देखते हैं कितनी priority. मैंने 255 कही थी आपको. This is the maximum priority we can have. Let's say 100 because as per our task it says change the priority to 100. Okay, my priority is changed now, but there is no convergence here. If I say show IP OSPF neighbors, still the same thing. Why? Because या तो राउटर को डाउन जाना चाहिए router 1 को, या हमें उसके ऊपर प्रोसेस को दोबारा इनेबल करना पड़ेगा OSPF.
let me go on to router number 1. Exit, I'll say, clear IP OSPF. Why I always write it like this? It is asking me yes or no. I'll say yes, I want to change it. दोबारा से नेबर ओएस सारा स्टार्ट हुआ, फुल हुआ, एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, वापस लोडिंग हो गई, लोडिंग टू फुल आ गया। वो पहले फुल से डाउन गया क्योंकि जब हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर एक्सटार्ट दोबारा हुआ, वापस लोडिंग आई, लोडिंग टू फुल आ गया। Now let me check at here at this particular router. Show अब मेरे अकॉर्डिंग this should be the DR. No, this should be the DR other bus because router 3 is higher. It has the highest loopback ID और highest router ID. उस पे 3.3.3 है, इस पे 1.1.1 है. Show IP OSPF neighbor. Look. जो मैंने कहा वही है, 4 के साथ तो कोई इशू नहीं, वो तो पॉइंट टू पॉइंट कर लेंगे। राउटर 2 इज माय DR, राउटर 3 इज माय बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। नाउ व्हाई दैट इज माय बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर? बिकॉज this is having a loopback address or a router ID which is 3.3.3.3 which is greater than 1.1.1.1 which is the router ID of router number 1. Is this thing clear to all of you? हाँ ना तो बोल दो। Yes, sir. Okay. Any questions? Okay. Happy learning and thank you for the cooperation. I hope you all enjoyed the session. So this was all the routing sessions जो मैंने आपके लिए and thank you very much. All the remote centers now we will reassemble at 2:30. Thank you very much. My session